Good morning, student. Today I am going to start my first video lecture for fourth chapter, carbon and its compound. So here our new chapter 4, carbon and its compound. The first video lecture is going to start here. Video first. First, for the new chapter 4, carbon and its compound, in which I am going to introduce about the carbon. First of all, the symbol of carbon is C. Symbol C. The atomic number of carbon is 6. Atomic number of carbon 6. Atomic mass of carbon is 12. Atomic mass of carbon 12. The electronic configuration EC of carbon. Electronic configuration of carbon 2,4, or we can write it in the SPDF form 1:2:2:2, 1:2:2:2, 1:2:2:2, 2:4 या 1:2:2:2, 2 जो ज़्यादा 2 6. वैलेंस इलेक्ट्रॉन फोर. वैलेंसी ऑफ कार्बन, वैलेंसी ऑफ कार्बन also 4. Carbon is tetravalent element. कार्बन इज टेट्रावैलेंट एलिमेंट. टेट्रावैलेंट एलिमेंट कहते हैं जिस एलिमेंट की वैलेंसी 4 होती है. एंड ऑल्सो इट इज नॉन मेटल. कार्बन इज नॉन मेटल. The percentage of carbon is found in our earth crust as well as in atmosphere. The percentage of carbon
in earth crust is 0.02%, such as carbonate, hydrogen carbonate, coal and petroleum. That the percentage of carbon in earth crust is 0.02%, है ना, as a mineral like carbonate, hydrogen carbonate, coal and petroleum. The percentage of carbon in earth crust is 0.02%. The percentage of carbon in earth crust is 0.02% as a mineral like carbonate, hydrogen carbonate, coal and petroleum. Also the percentage of carbon in our atmosphere is 0.03%. The percentage of carbon in air, the percentage of carbon in air in the form of carbon dioxide gas is 0.03% in the form of carbon dioxide gas. The percentage of carbon in air is 0.03%, है ना. The percentage of carbon in earth crust is 0.02%, and the percentage of carbon in air is 0.03%. It means the percentage of carbon is more in atmosphere than our earth crust. Now we are going to discuss about the carbon compounds. Also in that chapter, as we know that the carbon compounds are found in very large number. कार्बन के कंपाउंड भारी संख्या में पाए जाते हैं. तो कार्बन कंपाउंड का भारी संख्या में पाए जाने का क्या वजह है? What are the reason for finding the large number of carbon compound? कार्बन के भारी संख्या में कार्बन के भारी संख्या में कंपाउंड पाए जाने के लिए कौन से वजह है, कौन सा रीज़न है ना? रीज़न फॉर फाइंडिंग द लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड. हियर reason for finding the large number of carbon compound. Reason for finding large number of carbon compound
carbon compound. Reason for finding the large number of carbon compounds. कार्बन की भारी संख्या में कंपाउंड पाए जाने के क्या वजह है? What are the reason for finding the large number of carbon compounds? So there are three factors which are responsible for finding the large number of carbon compounds. कार्बन की भारी संख्या में कंपाउंड पाए जाने के लिए, कार्बन के भारी संख्या में यौगिक पाए जाने के लिए तीन वजह हैं, तीन कारक हैं. There are three factors which are responsible for finding the large number of carbon compounds. First is catenation. Catenation, C-A-T-E, catenation, C-A-T-E-N-A-T-I-O-N, catenation, C-A-T-N-A-T-nation, N-A-T-I-O-N, catenation. Second, tetravalency, E-N-T-Y, tetravalency. And third, multiple bond. These are the three factors which are responsible for finding the large number of carbon compounds. First is our catenation, second is tetravalency, or we can say that the carbon is tetravalent, and third is multiple bond. First is catenation. What is catenation? Catenation वह प्रॉपर्टी है ना? It is the unique property of self-linking of carbon atoms with other carbon atoms through covalent bond in straight chain, branch chain or various type of ring formation. कैटेनेशन क्या है? कार्बन में एक दूसरे कार्बन एटम से जुटने की टेंडेंसी होती है, यह गुण कार्बन में पाया जाता है. इट इज द peculiar property, we can say that it is the peculiar property for which is present in carbon, the self-linking of carbon atoms through covalent bond. एक कार्बन एटम का दूसरे कार्बन एटम से कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुट करके स्ट्रेट चेन बनाना, ब्रांच चेन बनाना और साथ ही साथ रिंग का फॉर्मेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रिंग का फॉर्मेशन, यह कार्बन की ये प्रॉपर्टी पाई जाती है. सेकेंड है टेट्रावैलेंसी. द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4. कार्बन का वैलेंसी 4 होता है. ड्यू टू बिग वैलेंसी ऑफ कार्बन forms join with other carbon atom as well as other atom of elements like oxygen, nitrogen, sulfur, etc. And the third is multiple bond. Carbon forms with other carbon atom single covalent bond, double covalent bond and triple covalent bond. These are it means कार्बन में मल्टीपल बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी पाई जाती है. इट मीन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तथा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी कार्बन में पाई जाती है. तो दीज आर द 3 फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग द लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. फर्स्ट इज आवर कैटेनेशन, सेकेंड इज टेट्रावैलेंसी एंड फोर्थ इज
multiple bond, formation of multiple bond. These are the factors which are responsible for finding the large number of carbon compounds. So today my first video lecture for class 10th for your fourth chapter carbon and its compound is going to finish. Thank you. Dhanyavad.